स्टार्ट। नया दौर स्पेशल के साथ मैं हूं मुर्तज़ा सोलंकी और हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा रूमी न्यूयॉर्क से। आज हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त भारत से सुधींदर कुलकर्नी, मुसन्निफ, सहाफ़ी और अमन के प्रचारक। साथ ही हमारे इस आज की गुफ्तगू में मजलिस में सीनियर सहाफ़ी ताल्लुक़ कश्मीर से इफ्तिखार गिलानी वो हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में सहाफ़ी नईमा अहमद महजूर भी हमारे साथ शरीक होंगी। हमारे साथ आज की इस मजलिस में शामिल होना था सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान की सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो हमारे साथ अभी तक शरीक नहीं हुए। अगर दौरान गुफ्तगू किसी तरह से वो हमारे साथ शामिल हो सके तो हम ज़रूर उनसे भी कुछ पूछेंगे। लेकिन हम आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं और ये गुफ्तगू है आज के बारे में। आज से 1 साल पहले एक अहम वाक़या हुआ था, उसने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बहुत असर डाला। उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज से 1 साल पहले आज ही के दिन 5 अगस्त की सुबह कोई 11 बजे के करीब मोदी सरकार ने पार्लियामान में अपनी अददी अक्सरियत की ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पुराने वादे को पूरा करते हुए भारतीय आइन से आर्टिकल 370 और 35A को निकाल बाहर किया था और भारतीय आइन में कश्मीर की खुसूसी हैसियत को भी ख़त्म कर दिया था। चंद दिन बाद भारत ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को भी ख़त्म कर दिया था और कश्मीर को 2 टुकड़ों में, कश्मीर और जम्मू को मिलाकर एक यूनियन इलाका, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को बिल्कुल एक अलग यूनियन इलाका करार दिया था। 1 साल से भारतीय कश्मीर में सैकड़ों रहनुमा ज़ेर हिरासत रहे हैं। इंटरनेट महदूद भी है और बंद भी है। बड़े अरसे तक मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन भी बंद रहे हैं। मोदी सरकार ने मोरूसी सियासत और करप्शन को ख़त्म करने और शहरियों पर इम्तियाजी कवानीन ख़त्म करने और तरक्की लाने का वादा किया था। वो कहाँ तक पहुँचे उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि दूर दूर तक उनका पता नहीं है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और बहुत से बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के इदारे वादी में इंसानी हुकूक़ की पामाली की दास्तान रकम करते रहे हैं। कश्मीर की वादी में अस्करियत पसंदी और मुसल्लह जदोजहद ख़त्म होने की बजाय उसमें इजाफा हुआ है और बहुत सी कश्मीरी जमातें और सियासतदान दिल्ली से करीब होने की बजाय दूर हो गए हैं। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए हैं। आए दिन लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर गोलाबारी और शहरियों के शहीद और ज़ख्मी होने की खबरें आती हैं। दोनों ममालिक दो बड़ी और 2 छोटी जंगें लड़ चुके हैं। प्रॉक्सी जंगें इसके अलावा हैं। ये सब कुछ होता रहा है। 1 साल बाद जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो यकीनन हम बात करना चाहेंगे गिलानी साहब से भी, कुलकर्नी साहब से भी, और हम भी अपने तरफ से कुछ हिस्सा डालेंगे कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। गिलानी साहब, अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि ये जो 1 साल गुजरा है, अगर आप बता सकें कि कश्मीर में क्या हुआ है 1 साल के अंदर, और ख़ास तौर पर जो बैनुल अक़वामी मीडिया है उसने इसे कैसे कवर किया है, अगर हमें बता सकें। बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद जो यहाँ पर आपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं खुद चाहूँगा कि रज़ा रूमी साहब से और सुदींद्र कुलकर्नी से जितना ज़्यादा टाइम मिल सके उनसे सुनने का बेहतर है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको जो है ना, थोड़ा एक तरह से ग्राउंड सा दे देता हूँ ताकि डिस्कशन करने में आसानी रहे। एक तो जो आर्टिकल 370 जो है 1950 से ही जनसंघ का एक इशू रहा है। राम मंदिर तो बहुत बाद में शामिल हो गया था भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में। आर्टिकल 370 तो बहुत पहले 1950 से ही इशू रहा था जनसंघ का। और इस दौरान लेकिन जो अब 2014 के बाद खास तौर पर
اب اس گورنمنٹ جو آئی وہاں پر ان کا ایکچولی آبجیکٹیوز کیا تھے, ان کے آبجیکٹیوز جو بہت ہی ایکسپلسٹلی بہت ٹائم پر آف ریکارڈ آن ریکارڈ جو ہے جو اس گورنمنٹ نے, یا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں دوبال صاحب جو ہے, جو کئی بار جو وہ کہہ بھی چکے ہیں, آبجیکٹیو تھا کہ اٹس دا فرسٹ اینڈ لاسٹ مومنٹ کہ ہمیں جو ہے کشمیریوں کو اور پاکستان کو بتانا ہے کہ واٹ دے وانٹ اچیو از ان اچیویبل. اس طرح سے جو ہے کشمیریوں کو جو ہے بتانا ہے کہ دیٹ نو بڈی از لسننگ ٹو دیم ان دا ورلڈ, اور پاکستان ان کی ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے جو لوگ آپٹیمزم کریٹ کرتے ہیں, دوز ہو کریٹ آپٹیمزم نیڈ ٹو بی پنشڈ whether externally or internally. Yeah, to achieve territorial dominance by inducting more and more forces and change mindset of Kashmir and Pakistan. اسی طرح سے جو ہے to make Kashmiris realize that their future lies with India. اور اس کے علاوہ ان کو کوئی فیوچر نہیں ہے, with the integration of India میں ہی ان کا فیوچر ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ٹو کنوے دس پرو انڈیا پولیٹیکل پارٹیز لائک نیشنل کانفرنس, PDP, پیپلز کانفرنس وغیرہ کی جو اپنے سیلف رول آٹونامی وغیرہ کے جو ڈاکومنٹس کو لے کر الیکشنز میں جاتے ہیں اس کو بند کریں, اور وہ ایک اینی ادر پولیٹیکل پارٹی جو انڈیا میں ہے ان کی طرح بہیو کریں ڈیولپمنٹ وغیرہ کے ایشوز کو لے کر. اسی طرح سے جو 8th پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو جب یہ آرٹیکل 370 جب ہٹا تھا, ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم اس کو پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے کر دیتے ہیں, اور ہم جو ہے جو ان کو یہ چائنا کو آفر کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک باؤنڈری ڈسپیوٹ اب سیٹل کر سکتے ہیں, کیونکہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز پر جو ایک لمٹ لیس پاورز ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے, وہ پاورز کو استعمال نہیں کر سکتے تھے, وہ باؤنڈری ڈسپیوٹ سیٹل نہیں کر سکتے تھے. اب وہ کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں چینج ہوا کیا کشمیر میں. پچھلے 1 سال میں چینج یہ ہوئی ہیں کہ 106 جو لاز تھے سینٹرل لاز وہ ایکسٹینڈ ہو گئے کشمیر پر, 164 لاز جو تھے جو جموں اینڈ کشمیر اسمبلی نے اپروو کیے تھے وہ ان کو ختم کر دیا گیا, وہ اسٹیچوٹ بک سے ان کو نکال دیا گیا. اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ لاز نکال دیے جموں کشمیر سے جو کہ جموں کشمیر اسمبلی نے پاس کیے تھے, اس میں جو ایک قانون ہے پبلک سیفٹی ایکٹ اس کو کنٹینیو رکھا گیا, اور اس پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو ہے پچھلے 1 سال کے دوران ہزاروں کے لوگ جو ہیں جیلوں میں بند ہے, کیونکہ پریونٹیو ڈیٹینشن لا ہے, اس میں آپ کو کہیں کورٹ وغیرہ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. جب بھی دنیا میں کہیں پر اس طرح کی کوئی کانسٹیٹیوشنل چینجز ہوتی ہیں تو کم سے کم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, ایک ریفرنڈم ہو جاتا ہے. لیکن کشمیر میں سچویشن یہ, یا ایون انڈیا میں جب کلکرنی صاحب پرائم منسٹر آفس میں تھے, جب اس وقت کئی نئی اسٹیٹس بنی تھیں, یہ جھارکھنڈ کی اسٹیٹ بنی تھی, چھتیس گڑھ کی اسٹیٹ بنی تھی, اتراکھنڈ کی اسٹیٹس بنی تھی, تو وہاں کی پہلے اسمبلیز نے ریکمنڈیشنز بھیجی تھی, تب جا کر ایک بل ڈرافٹ ہوا تھا, تب جا کر پارلیمنٹ میں سینٹرل گورنمنٹ نے وہ بل رکھی تھی. یہاں پر اسمبلی سے پوچھا بھی نہیں گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں میجورٹی کے ساتھ جو پاس ہوا ہے, پارلیمنٹ کی جو میجورٹی ہے 788 ممبرس جو ہیں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں, اس میں سے 10 ممبر جموں اینڈ کشمیر سے ہیں. ان 10 ممبر میں سے ایک ممبر کو تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنے دیا, اس کو تو ڈیٹین کر کے رکھ دیا گیا سری نگر میں ہی, فاروق عبداللہ کو. باقی جو اس میں سے 9 ممبر بچے ہیں, 9 ممبر میں سے 6 ممبروں نے تو اپوز کر لیا. اس میں سے تو 2 ممبر تو اتنے ہسٹیریکل ہو گئے تھے, انہوں نے تو ایوان میں ہی اس وقت راجیہ سبھا میں انڈین کانسٹیٹیوشن کی کاپیاں ہی پھاڑ ڈالی تھی. تو بالکل یہ ایسا اسٹیپ جو ہے آلموسٹ انپریسیڈنٹڈ. اور اس کے بعد سے جو اب چینجز ہوئی ہیں ایک ایک کر کے, چینجز کیا ہوئی, سب سے پہلے ایک لا لایا گیا جس میں جو لینڈ ٹرانزیکشنز ہیں, لینڈ ٹرانزیکشن جو جوڈیشری کرتی ہے, اس کو جوڈیشری سے وہ پاورز لیے گئے اور ایگزیکیوٹیو کو دیے گئے. اس کے بعد جو ہے دی کائنڈ آف وینجنس آپ دیکھیں کہ شیخ عبداللہ جس نے جو ہے 1947 میں اگر کشمیر آ گیا انڈیا کے پاس, اس میں شیخ عبداللہ کا ایک بہت بڑا رول تھا. یہ مہاراجہ کے بس کی بات نہیں تھی. اگر اس وقت وہ شیخ عبداللہ اس لوگوں کو سڑکوں پر لے آتا تو انڈین آرمی کا پاسبلٹی نہیں تھا کہ انڈین آرمی وہاں پر کشمیر میں لینڈ کر سکتی تھی. اور اس دسمبر 5 کو شیخ عبداللہ کی برتھ اینیورسری کیلنڈر سے نکال دیا گیا. جولائی 13 کو کشمیر کا نیشنل ڈے, اس کو کیلنڈر سے اس کو جو ہے اسٹیٹ کیلنڈر سے نکال دیا گیا. یہ پولیس کے میڈلز یا باقی جو پرائزز ہیں گورنمنٹ کے پرائزز, جن کا نام تھا شیر کشمیر گیلنٹری ایوارڈ, شیر کشمیر پولیس میڈل, شیر کشمیر وغیرہ, جو ان میں سے شیر کشمیر کا پریفکس نکال دیا گیا. یہ نیمز آف اسی طرح سے جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے نام چینج کر دیے گئے.
अब वो बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे पढ़ भी नहीं पाते हैं उन नामों को। महकमे सेहत आम और आबपाशी का नाम जो जल शक्ति रख दिया गया, इसी तरह से हेल्थ का स्वास्थ्य विभाग रख दिया गया। वो बेचारे लोगों की समझ में भी नहीं आता है अब उस तरह की। जो उर्दू जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा तो उर्दू इज नो मोर एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब चूंकि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, अब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब अचानक इस तरह की चीजें होना, कश्मीरी पिछले 800 सालों से अब कश्मीरी जो है पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी और पर उसका जो है स्क्रिप्ट चेंज करके देवनागरी स्क्रिप्ट लिया गया। यानी कि मैं तो खुद पढ़ ही नहीं पाऊंगा वो कश्मीरी। मैंने जो कश्मीरी जो पढ़ी है तो मैंने तो कश्मीरी तो पर्शियन स्क्रिप्ट में पढ़ी है। मैं अपनी लैंग्वेज से, अपनी आइडेंटिटी से ही मैं बेगाना हो गया हूँ। इसी तरह से जो है इस अब कोविड के इन द मिडेस्ट ऑफ दिस कोविड क्राइसिस एक जो लॉ जो है डोमिसाइल लॉ की नोटिफिकेशन लाई गई और उसमें जो है जिनको 15 साल तक जो कश्मीर में रहे हैं, दे आर नाउ ऑटोमेटिकली द सिटीजन ऑफ कश्मीर। इसी के बाद जो है अब ये कह सकते हैं हम कि ये इतना आसान नहीं है। कश्मीर में डेमोग्राफी कैसे चेंज हो सकती है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो कैसे डेमोग्राफी चेंज हो सकती है। लेकिन कश्मीर में एज पर 2011 की सेंसस के हिसाब से 2.8 मिलियन वहां पर आउटसाइडर्स, खासतौर पर जो हमारे बिहार के लेबरर्स वगैरह रहते हैं, जो अब ऑटोमेटिकली एज सिटीजन हो गए हैं अब कश्मीर के। लिहाजा जो है जो इट इज नॉट एन, बिल्कुल ही हवा में नहीं है अगर कोई कह रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज वहां पर हो रही या होने वाली है, जिसमें से शायद 40,000 के करीब को ऑलरेडी सिटीजनशिप इस दौरान तो मिली चुकी है। न्यू मीडिया पॉलिसी इसी दौरान लाई गई। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो है एक अथॉरिटी दी गई एसडीएम को और एसएचओ को, वो डिसाइड कर सकता है कि वो कौन सी चीज एंटी नेशनल है, कौन सी चीज फेक न्यूज है, और उस पर जो है दे कैन हॉल अप एनी मीडिया। और कर भी दिया गया, कई जैसे हिंदू के रिपोर्टर्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के, उनको पुलिस स्टेशन में बुला लिया गया वहां पर उनकी खबरों के लिए। और सबसे इसके बाद जो है अभी पिछले महीने अब नोटिफिकेशन जो है अब आ गई है कि नोटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एरियाज जो हैं वो नोटिफाई कर दिए गए। मतलब आर्मी जो आप कहीं भी किसी वक्त भी किसी तरह से जो भी किसी भी जमीन को आप कब्जे में ले सकती है और उसको परमिशन की अब जरूरत नहीं है। एक तरह से जो है जब जिस वक्त 1947 में जिस वक्त शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त डिसाइड किया था उनको इंडिया के साथ जाना है, आप याद रखें हमारे कश्मीर में जो हमारे पास दो आइडेंटिटीज है, एक कश्मीरी आइडेंटिटी है और दूसरी हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी है, एंड वी आर प्राउड ऑफ बोथ दीज आइडेंटिटीज। Sheikh Abdullah was himself proud of both his identities. He had in his handset of his mind, या उनके जो लोग हैं बाकी जिनके साथ हम डिस्कस करते थे, उनका कहना था कि अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे हो सकता है हमारी मुस्लिम आइडेंटिटी प्रिजर्व हो जाएगी लेकिन हमारी कश्मीरी आइडेंटिटी वहां पर मुतासर हो जाएगी। That was the uppermost in his mind when they decided to come to India, कि इंडिया में एक सेकुलर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें कश्मीरी आइडेंटिटी जो है प्रिजर्व रहेगी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि सिचुएशन मेरे ख्याल में जो कश्मीर जो अब 1846 से भी पहले पहुंच चुका है, जहां पर कश्मीर की जो है मुस्लिम आइडेंटिटी, कश्मीर की जो एज ए कश्मीरी आइडेंटिटी, नेशनलिस्ट आइडेंटिटी, दोनों अब खतरे में लग रही है। और मैं सिर्फ 1-2 मिनट आपका फिर लेना चाहता हूं कि कश्मीर में अभी 1 ही साल हो गया आर्टिकल 370 खत्म हुए, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी सिर्फ 1 ही साल हो गया है। कश्मीर में जो 12.5 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें तो मुस्लिम तकरीबन 68.31% है और हिंदूज 28.43% है। इस वक्त 24 सेक्रेटरीज हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, सेक्रेटरीट में, जिसमें सिर्फ 5 मुसलमान हैं। 58 टॉप ऑफिसर्स हैं जिसमें सिर्फ 12 मुसलमान है। उसमें सिर्फ एक ने रिजाइन किया था, शाह फैसल ने, और वो अभी 10 महीने जेल में रहा। अब 10 महीने के बाद निकला, उसका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं 12 मान लेता हूं उनको। सेकंड टायर में जो है 523 ऑफिसर्स टोटल हैं, जिसमें से 220 सिर्फ मुसलमान है, यानी 42% है। पुलिस में जो 66 ऑफिसर्स हैं पुलिस के, जिसमें सिर्फ 7 मुसलमान है, 10.6% सिर्फ। और सेकंड टायर में पुलिस में 248 ऑफिसर्स हैं, जिसमें सिर्फ 108 मुस्लिम्स हैं, 43% बन जाता है। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन टू कश्मीर इन नेक्स्ट 5 years, व्हाट विल हैपन टू कश्मीर इन नेक्स्ट आगे जो है कश्मीर के साथ क्या हाल हो सकता है। अब ये तो ऑफिशियल डम में ब्यूरोक्रेसी की बात बताई मैंने। अब बिजनेस की बात करें, बिजनेस की क्या हालत है। पिछले 1 साल में जो 52 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो अवार्ड हुए हैं, उसमें से 40 माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स उन्होंने आउटसाइडर्स को दिए हैं। पहला जब ऑक्शन हुई थी उस वक्त बताया गया था कि अगर लोकल कोई आया ही नहीं, ई ऑक्शन थी, लोकल कोई आया ही नहीं।
लोकल आता कहाँ से था, जब इंटरनेट ही नहीं था तो कहाँ से आ जाता। उसके बाद जब बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए तो उस वक्त इंटरनेट थोड़ा बहुत था, लेकिन इसके बावजूद जो 52 कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में 40 कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर चले गए, सिर्फ 11 के करीब शायद कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जो लोकल लोगों को मिले हैं। इसी दौरान जो है लोकल बिजनेसेस को जो है तकरीबन 400 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा। मैं एक शहर से आता हूँ, सोपोर से, जो एप्पल का सेंटर है, जो वर्ल्ड फेमस एप्पल्स पैदा करता है, वहां पर 135,000 ऑफ मेट्रिक टन ऑफ एप्पल्स जो है वो खराब हो गए बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। और ये बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी का। ये सोपोर जो है हमेशा से एक बैरोमीटर माना जाता है कश्मीर की इकोनॉमी का। और ये कश्मीर जो है एक्चुअली बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, ये कश्मीर जो है बहुत ही मुफलिस एरिया है या बहुत ही बैकवर्ड स्टेट थी इंडिया की, जो एक साल पहले तक कश्मीर जो है एज ए स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, जो 11 स्टेट्स हैं इंडिया में जो हिली स्टेट्स मानी जाती हैं, जिनको स्पेशल इकोनॉमिक स्टेट्स मानी जाती है, जिसमें कश्मीर भी है, जहां फॉरेस्ट एरियाज और सेली स्टेट्स मानी जाती हैं, उन 11 स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड वाज थर्ड इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। जम्मू कश्मीर वाज सेकंड इन टर्म्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नेट हमारा एसडीपी ही कश्मीर का 780 बिलियन था। और इस वक्त अब हालत ये है 11 महीने के बाद कि कश्मीर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.9% है, जबकि ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 9.54% है। ये इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड, एक अच्छी खासी जीती जागती एक लाइव स्टेट को आप जो है उसकी आप ऐसी हालत करते हैं, उसको आप रैग्स से रैग्स तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अब हाउ टू, ये जो है ना, इट हैज एक्चुअली कंप्लीटेड दैट सर्कल ऑफ, बिल्कुल कश्मीरियों की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल डिसएम्पावरमेंट का सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया है। अब कश्मीरी जो है एक तो डिसएम्पावरमेंट कॉम्प्लेक्स में भी मुब्तला किया गया उनको, दूसरी तरफ से जो है सीज मेंटेलिटी में भी उनको मुब्तला कर दिया गया है। अब ये इंडियन एंड पाकिस्तानी लीडर्स दे नीड टू एक्चुअली डेलिबरेट, वो कर क्या रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि टू फाइंड वेज। ये एक बहुत बड़ी एक कौम को जो है एक आतिशफशां पर खड़ा कर रहे हैं। ये आतिशफशां जिस वक्त फट पड़ेगा उस वक्त ना इंडिया भी और इस वक्त पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब। अभी जब हम आपको सुन रहे थे तो इसी असना में हमारी दोस्त और कलीग सीनियर सहाफ़ी नईमा अहमद महजूर भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हो गई हैं। कुलकर्नी साहब, आपने इफ्तिखार गिलानी साहब को सुना, उन्होंने एक तरह से जो एक माइक्रो व्यू है कश्मीर का, वहाँ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो वाक़यात हुए हैं, उसकी बड़ी तफसील से बात की। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि रज़ा आपसे क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब ये एक साल पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई और आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, 35A को रिवोक किया गया, और चंद दिन बाद एक फुल फ्लेज स्टेट जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल राइट्स थे, उसको तोड़ के दो हिस्सों में यूनियन टेरिटरी में डिमोट कर दिया। और वादे ये किए गए कि जी जो डिस्क्रिमिनेशन है कश्मीर के अंदर, इसको हम इससे ख़त्म करेंगे और डेवलपमेंट लाएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पंप करेंगे, कश्मीर की इकोनॉमी को हम बेहतर करेंगे, वहाँ पे करप्शन ख़त्म करेंगे, डायनास्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म करेंगे और इसकी फुल इंटीग्रेशन हो जाएगी इंडिया के साथ, और कश्मीरी भी अपने आप को उतने ही इक्वल सिटीजन्स महसूस करेंगे जो कि इससे पहले 370 और 35 की वजह से मुमकिन नहीं था। तो ये जो प्रॉमिसेस थे उस पर मोदी सरकार ने क्या अचीवमेंट्स क्या हैं इस पर? अगर रजा आप कुछ पूछना चाहें तो। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है, प्लीज। सबसे पहले मुर्तजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे आपने नया दौर टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू रजा रूमी साहब, थैंक यू इफ्तिकार भाई, एंड आई एम हैप्पी दैट वी आर आल्सो जॉइंड बाय नईमा महजूर जी।
I would have been very happy also to have the opportunity of discussing today's issues along with my very dear friend Senator Mushahid Hussain Sahab, whom I have known since 1999. So Murtaza bhai, let me make a few introductory remarks before coming to the last 1 year's developments. That was my first meeting with Mushahid Hussain Sahab is very significant for our discussion today because I had accompanied our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his historic bus yatra, bus journey from Amritsar to Lahore. And Mushahid Sahab was there to welcome him, along with, of course, your former Prime Minister Nawaz Sharif Sahab. And it had created a lot of hope for reconciliation and a breakthrough to honest dialogue between India and Pakistan. But all of us know what happened thereafter. It has been a very unhappy, very frustrating 2 decades of ups and downs, more downs than ups. And we have now come to uh, a time when relations between India and Pakistan have perhaps reached their lowest point, and the situation in Kashmir, which never was really very happy for many decades, has, of course, gone to uh, the worst ever period. I come here in this discussion both as an Indian, as a patriotic Indian, and also as a South Asian. Because let me also introduce myself here that I have founded a platform called Forum for a New South Asia. A new South Asia, at the core of which is a strong bond of friendship and cooperation between India and Pakistan, and also India-China. So India, Pakistan, China at the core of a new South Asia. Now, when we discuss the developments in Jammu and Kashmir in the last 1 year, we must, of course, contextualize this in the developments ever since 1947, because it is a outcome in some ways of what had been happening ever since 1947, and the failure of both India and Pakistan to resolve the issue of Kashmir in an amicable and in a just manner. What I'm going to say in this discussion has a certain goal, that we must find a solution and not just dissect or discuss the problem. And in order to understand and arrive at least conceptually, arrive at the contours of a solution, we must have a common understanding, and that common understanding can only come through honest, candid discussion. In this, there will be some differences. I want to be very upfront that perhaps there will be some differences, and these differences should be respected. The differences from Pakistani side have to be respected by Indians, and differences amongst Indians themselves should be respected within India and also by Pakistanis. So let me turn the discussion to some of the questions that Murtaza bhai asked. The last 1 year has been a very sad 1 year as far as Indian democracy is concerned, Indian secularism is concerned, indeed, the idea of India is concerned. Friends, we are discussing the issue of Jammu and Kashmir on the first anniversary of the abrogation of Article 370 and 35A. But another very significant event happened today, and the two are not entirely separate. The groundbreaking ceremony
for the construction of Ram Temple in Ayodhya, which was done by Prime Minister Narendra Modi. Why August 5 was chosen for this event? We are not going to discuss the Ayodhya issue, I think so. But of course, in the discussion, if that comes up, most welcome. But why the government chose, why the Prime Minister chose August 5 for this event in Ayodhya is very significant, because somewhere the ruling party to which I once belonged wants to convey a message that 1 year ago we took a bold historic decision to abrogate Article 370 and fulfilled our election manifesto promise. Similarly, today we are fulfilling yet another promise. Now, in this, there is a certain triumphalism which is unfortunate. The manner in which Article 370 was abrogated was highly unconstitutional, and Iftikhar Bhai has commented on it. The people of Jammu and Kashmir were not consulted. The opinion or the consent of a Delhi appointed governor has been construed as the consent of the people of Kashmir or Jammu and Kashmir, which of course is very, very unacceptable. And in the last 1 year, the Supreme Court of India has not yet begun hearing the constitutional propriety of the manner in which Article 370 was abrogated. So many things have happened in the last 1 year, which, as I mentioned earlier, raise a big question mark over our commitment to democracy, our commitment to constitutional values, and of course, our commitment to secularism. I say secularism because we very proudly stated, and I strongly believe in this, Jammu and Kashmir, one reason why Jammu and Kashmir acceded to India, even though the manner of accession was questionable. But as Iftikhar Bhai said, Sheikh Abdullah chose to be part of India. And our first Prime Minister Nehru and the rest of the political establishment broadly welcomed it, because we believed that the only Muslim majority state in India, Jammu and Kashmir, even though its Muslim majority, has accepted, chosen to be part of India. So this was, and this continues to be, a matter of pride for us, because we take pride in India being a secular nation, even though the majority of Indians are Hindus. Unfortunately, in the last 1 year, and the manner in which Article 370 was abrogated, the Kashmir problem has somehow been converted into a Muslim problem. And ever since the decision of Article 370 abrogation, the manner in which it has been projected by the Indian media is to somehow show the Kashmiris and Kashmiri Muslims in particular as anti-national, as Gaddar. In some ways, this is an extension of the Muslim problem in the rest of India. Unfortunately, this is how politics in India has developed in the past 6 years. A good example, of course, is the Citizenship Amendment Act, CAA. So the Kashmir issue has been further communalized, and communalizing the Kashmir issue has in fact made solution to the Kashmir issue more complicated. The democratic rights of people have been suppressed. Human rights violations are, of course, there. Large number of political representatives, leaders have been detained.
a few of them have been released, but very large number of them are still under detention. Now, all this certainly does not contribute to a positive image of India internationally. So, on this, I have I speak for all democracy-loving people in India. At the same time, let me also be very candid here, friends, that why did the abrogation of Article 370 receive so much support in India? I would like people in Pakistan, the politicians in Pakistan, to understand that this action has received widespread support in India. Why did this happen? And let me tell you that even if there is a change of government in India, and if the BJP is replaced by, let's say, a Congress government or a Congress-led coalition government, no government is going to restore Article 370. Why has it happened? Because of a certain kind of approach by Pakistan to the Kashmir issue. And here I would like my friends in Pakistan all honest and candid in asking themselves whether Pakistan's approach to the Kashmir issue has been principled, has been proper, and has been conducive to finding a proper solution. Let me give just one example. Just a few days ago, I was watching one propaganda video put out by the government of Pakistan on Kashmir, 1 year of abrogation of Article 370. And it said, of course, it showed all the human rights violations, etc., etc. But there was one line in that video, which मैं हूँ कश्मीरी, मेरा खून है मुसलमान. तो ये जो यानी on the one hand, our government is trying to communalize it and make it a Muslim issue, but so is the Pakistan government. Is the Kashmir issue a Muslim issue? Second question. Ever since the developments in Kashmir, abrogation after abrogation of Article 370, one slogan that once again sought to be popularized in Pakistan was Kashmir banega Pakistan. Now, how is Kashmir banega Pakistan and Azad Kashmir, how are they compatible? Now, this certainly is not going to be taken very positively by the people of India. Irrespective, it's not just a BJP issue. Let me tell you that even followers of non-BJP parties are not going to accept this. Thirdly, and this in fact goes to one of the roots of the problem, the resort to terrorism and religious extremism for solving the problem of Kashmir in a way that Pakistan wanted has made the problem, in fact, worse for the people of Kashmiris themselves and also for India and Pakistan. Terrorism cannot be a solution to any problem. It can only worsen the problem. And I am sure that many Pakistanis, right-thinking Pakistanis, realize that it has taken a big toll on Pakistan itself, just as it has taken a big toll in India. But as I said right in the beginning, our approach should be to find a solution and not just to dissect the problem. Let us not blame each other, even though both India and Pakistan are blameworthy. On the basis of a very honest introspection on the part of both India and Pakistan, we should look forward to the future, how to solve the problem of Kashmir and, in fact, the larger problem of Jammu and Kashmir. In fact, let me point out one more very important thing and a serious thing that has happened in the last 1 year, and that is the Kashmir issue, the Jammu and Kashmir issue has become trilateralized. It was, for a long time, it was a bilateral issue between India and Pakistan, but now it has become trilateral with unfortunate
standoff between India and China in eastern Ladakh. So instead of complicating this problem further, it is absolutely essential that the right thinking people in India, in Pakistan, and also China, we think in terms of a solution that is democratic, that is just, that brings a life of dignity, human dignity to the people of Kashmir and the rest of Jammu and Kashmir, and leads to a certain kind of an integration between India and Pakistan. I'm not saying reunion of India and Pakistan, because Pakistan is an entity which has to be respected. No undoing partition, but we must undo the negative effects of partition. And one of the negative effects of partition was the unfortunate problem of Kashmir. So मेरा ये कहना है कि हम मिलकर सोचे कि क्या हम ऐसा एक solution निकाल सकते हैं which is acceptable to India, which is acceptable to Pakistan, and most importantly, which is acceptable to Kashmiris and other people in Jammu and Kashmir. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू कुलकर्णी जी. मेरा सवाल जो है वो मैं कुलकर्णी साहब से बाद में करता हूँ. मैं नईमा ने चूंकि ज्वाइन किया है, तो मसला ये है, ये कश्मीर की बहस के ऊपर जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आवाज और उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है. ये हमेशा ये होता है कि जी पाकिस्तान ने ये टेरिटरी लेनी है, ये इंडिया की वो है शहरग है या क्या अटूट अंग जिसे कहा जाता है हिंदी में. तो भाई बात ये कि वहां पे लाखों कश्मीरी हैं और वो जो उनका भी कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, वो पेंडिंग है, सस्पेंडेड है. तो मैं नईमा जी आपसे ये बात करना चाहता हूँ इसी मौजू के ऊपर कि कश्मीरी वॉइसेस जो हैं ये क्यों नहीं आती मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया में भी, और पाकिस्तान में भी आपने इसके बारे में लिखा भी है. एक तो ये है, और दूसरा खवातीन के हवाले से हमें बताइए कि खवातीन और बच्चे जो हैं ये जो 1 साल का लॉकडाउन है, हम इसकी रिपोर्ट्स पढ़े एजुकेशन के हवाले से दीगर, वो उनकी क्या सिचुएशन है वहां पर. जी रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबका खैर मकदम करती हूँ. मैंने इस पे लिखा भी था, बल्कि मैंने अभी रिसेंटली एक कॉलम लिखा था और वो बेस किया था. जो कश्मीरी एक है बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और उन्होंने काफी काम किया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी. तो जब मैंने अभी उनसे रिसेंटली मैंने कहा कि कश्मीरी आवाज जो है वो क्यों दब गई है इंडिया पाकिस्तान के टेरिटोरियल डिस्प्यूट में, हमारी आवाज कहीं पे नहीं है, हमारी एस्पायरेशन या जिसके लिए जिन हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं. तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक सेंटेंस कहा था कि हमारा अब अल्लाह है या फिर कुछ रिमोट कंट्रोल्स. तो समझ लीजिए कि हमारे जो हैं इंडिया पाकिस्तान में कुछ रिमोट कंट्रोल जो हैं वो इस वक्त चला रहे हैं कश्मीर को. क्योंकि आप इंडियन कश्मीर को भी देखें, पाकिस्तानी कश्मीर को भी देखें, कि वहां से इतने सारे जो कश्मीरी हैं, पढ़े लिखे कश्मीरी, और जो बात कर सकते हैं, बात करना जानते हैं और अपना केस प्लीड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने न तो भारत में उनको कहीं पे इजाजत मिली, और न मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा वाकिफ हैं इस बात से कि पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहां हमने देखा कि कश्मीरी बाहर के मुल्कों में बैठे हैं और वो अपनी बात अब दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं पे दोनों मुल्कों का कसूर है, क्योंकि कश्मीरी वो लड़ रहे हैं, चाहे वो पुरअमन तरीके से, चाहे आपने देखा पिछले 3 दहाइयों में मिलिटेंसी भी रही, उस के वसातत से लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, अपने हकूक के लिए जद्दोजहद शुरू की और इतनी सारी कुर्बानियां दे रहे हैं. और फिर जब इंडिया ने लास्ट ईयर का जो डिसीजन किया उसमें तो आपने सब कुछ छीन ही लिया, बल्कि हिंदुस्तान के आईन के तहत अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि आप हमारा हिस्सा भी नहीं है. हालांकि जवाब ये पेश किया जा रहा है कि इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन ये किस तरह की इंटीग्रेशन है?
अभी तक, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट को देख लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे कुलकर्णी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी हमारी ऐसी हालत है कि जहां पे अब इंसाफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे हालात में कश्मीरी जो है वो सहमे हैं, घबराए हैं पिछले 1 साल से। अब जो उनकी सिचुएशन, जो एनवायरनमेंट उनका बनाया गया है, एक खौफ सा तारी किया गया है उनपे कि वो अब तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो फिर भी ये कहते थे कि हमारा एक डिस्प्यूट है, अगर उसमें 3 फरीक है तो हमें भी बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन अब तो बिल्कुल टोटली वो इग्नोर है। आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के 1.2 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त टोटल साइलेंट, नम और उनको कर दिया गया है। इसलिए कहीं पे आप कश्मीरी वॉइस नहीं देखेंगे या कश्मीरी क्या चाहते हैं। जैसा इन्होंने कुलकर्णी जी ने कहा कि आप अगर नारा बना रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान कह रहा है अब तो टोटल कुछ भी नहीं है, 370 भी गया, अब तो आप बिल्कुल हिंदुस्तान के शहरी हैं। लेकिन शहरी बना के भी आपका तनासुब जो कश्मीरी मुस्लिम रियासत थी उसको भी खत्म करेंगे, आपका परचम भी खत्म किया, आइन भी आपका लिया, आपकी शिनाख्त खत्म कर दी। तो इस सारे तनाजुर में जब आप एक कश्मीरी को देख रहे हैं, बहुत ही होपलेस सिचुएशन में है, वो बहुत ही मायूस कुल सिचुएशन में जो फील कर रहा है कि मेरा सब कुछ छीन के अब मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ सांसें भी उधार लेनी होगी, तब मैं जिंदा रहूंगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा, फिर आपने कहा कि खवातीन के हवाले से आप देखिए जो भी सिचुएशन कश्मीर में हो रही है, पुरतशद्दुद सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। पिछले 30 बरसों से हम देख रहे हैं खून खराबा, तशद्दुद। इसके अलावा हमारे बच्चों ने भी, हमारी जो इस वक्त चौथी नस्ल है, उन्होंने भी ये सब कुछ इस गन पॉइंट पे वो बच्चे भी पैदा हुए हैं और बच्चे देख रहे हैं। तो खवातीन ये सारा जो ब्रेंड है इसका वो सह रही है, वो फेस कर रही, वो फ्रंट पे है जो ये सारा सह रही है। उसका बच्चा गायब हो रहा है, उसका हस्बैंड जेल में है, उसके बच्चे को एनकाउंटर में मारा जाता है, वो बेचारी 30-40 वर्षों से मकान बना रही है, उसको आप बारूद से उड़ा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल से आप देखेंगे कि इस वक्त जो कश्मीरी खातून है वो किस मुसीबत का शिकार हो चुकी है। वो इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि क्या मुझे अब जिंदा रहने का हक भी नहीं है? मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकती, मेरा बच्चा किधर है मुझे बताया नहीं जाता है, मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और वो इतनी घिरी है इन हालात में कि वो अब तो उफ भी नहीं करती, अब तो खामोश है। फिर वैसे भी आपने देखा हमारी सोसाइटी में जहाँ पे अब भी थोड़ा सा वो जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वो अब भी चल रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा जो मुसीबत है वो औरत उठा रही है इस वक्त। 10,000 औरतें हमारी इस वक्त हैं जिनके हस्बैंड गायब है, डिसअपियर हुए हैं पिछले 30 वर्षों में। उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने आप को विडो कहेंगे, वो अपने आप को मैरिड कहेंगे, वो दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिनको हम हाफ विडोज कहते हैं। ये भी हमारा एक मसला है। फिर हमारा ये भी मसला है कि हमारे जो औरतें हैं 40-45 साल की, क्योंकि मेल पॉपुलेशन जो है, जो मैरिजेबल एज होती है, वो बेशतर उसमें जो मिलिटेंसी में कुछ चले गए, कुछ जेलों में बंद है, कुछ कहीं और चले गए हैं। तो ये आप 40,000 हमारी जो इस वक्त लड़कियां हैं वो 45 साल की हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, इसलिए शादियां नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। और दूसरा फिर जो पुरतशद्दुद सूरत हाल है उसकी वजह से एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आप जिसको कहें कि नॉर्मल डे है और नॉर्मल डे वो देख सकती है, ताकि वो जिंदगी के दूसरे जो जिंदगी के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसकी तरफ वो तवज्जो दे। तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं एक आम कश्मीरी के लिए, वो चाहे कश्मीरी खातून हो, कश्मीरी नौजवान है, कश्मीरी बच्चा है। हमारे बच्चों को आप देखिए नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं। अभी आपने देखा पिछले 2 महीने में 30 से ज्यादा नौजवानों ने खुदकुशियां की है। वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जहनी दबाव का इतना शिकार हो गए हैं, उनको आप मजबूर कर रहे हैं, या तो आपको मिलिटेंट बनना है, या तो आपको गन उठाना है, फिर आपको टेररिस्ट बताया जाएगा, फिर उसके आड़ में आपका फेक एनकाउंटर किया जाएगा और फिर दुनिया को बताया जाएगा कि आप टेररिस्ट थे।
तो इस तरह के हालात जब बनाए गए हैं तो आप ही बताइए कि वहां पे किन मसाइब का शिकार हैं आम लोग, जहां पे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बल्कि मैं कुलकर्णी जी के वसातत से पूरे हिंदुस्तान के अवाम से कहना चाहती हूँ कि कम से कम ये कलेक्टिव कॉन्शियंस एक तो होती है कि जब आप देखते हैं कि एक 3-4 साल का बच्चा अपने दादा अपने नाना की लाश पे बैठा हुआ है, क्या उससे भी आपका दिल नहीं हिल गया? क्या आप ये सारी चीजें नहीं देख रही हैं? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि इन औरतों के जिनके घरों में जाके रात को रेड होता है, जिनके घरों में जाकर आप रातों को उनसे बच्चे छीन लेते हैं और जेलों में बंद रखते हैं, और ये भी नहीं बताते कि किस जेल में रखा है। तो कम से कम हिंदुस्तान के अवाम को ये तो सोचना चाहिए था। और जिस हिंदुस्तान के साथ शेख अब्दुल्ला ने इलाह किया था, ये तो वो हिंदुस्तान नहीं था। अगर शेख अब्दुल्ला को भी आज मालूम होता कि उसने इस हिंदुस्तान के साथ इलाह की हिमायत की थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने आप को भी माफ कर पाएंगे। बल्कि उनकी जो औलादे हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर साहब, ये सारे लोग, वो तो खुद इस वक्त परेशान उन हालात से गुजर रहे हैं कि हमारे वालिद साहब ने जो किया है क्या वो सही किया है। अब ये सवालिया निशान मेन स्ट्रीम के लिए सबसे बड़ा बन गया है कि क्या जो इलाहा हुआ था वो सही था। और हो सकता है अनकरीब ऐसा दिन आएगा जब आप पूरा मेन स्ट्रीम देखेंगे कि वो भी मजबूर हो जाएंगे ये कहने के लिए कि जो इल्हाक हुआ था गलत हुआ था, और पूरा आपको रिड्रॉ करना होगा 47 का, वो सिचुएशन वापस लानी होगी जब आपको तय करना होगा कि हिंदुस्तान को क्या लेना है और पाकिस्तान को क्या लेना है, और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो इलाका था उसको आपको अलग छोड़ना है। मुझे लगता है कि वो दिन अब जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि भाई आप अखंड भारत बना रहे हैं, पाकिस्तान ने मैप शुरू किया जिसमें जूनागढ़ आप मिला रहे हैं, अब वो सारी चीजें जब आप ये सारा आप पूरा जो मैप नए बना रहे हैं, तो उससे हमें लगता है कि शायद उम्मीद है कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के अवाम को थोड़ी राहत मिलेगी इंशाअल्लाह, और वो मकाम हासिल करेंगे जो 47 में था। जी शुक्रिया। सोलंकी साहब, अगर आप का कोई क्वेश्चन है तो मैं कुलकर्णी साहब से आई वुड लाइक टू आस्क हिम वन और टू थिंग्स। जी प्लीज आप पूछ लीजिए। तो कुलकर्णी साहब, आपने बिल्कुल पते की बात कही कि ये अब एक जो है मिलजुल कर हमें आगे की तरफ जाना है, प्रॉब्लम्स की डायसेक्शन है। लेकिन ये जो नईमा ने जिस तरह बताया सिचुएशन, हम भी इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कुछ में इंडियन मीडिया से देखते हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिया से देखते हैं, इफ्तिखार गिलानी साहब जैसे लोग रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं, हम बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। तो इंडियन जो कलेक्टिव कॉन्शियंस की बात हो रही है इस वक्त, ये मेरे ख्याल से एक ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जब तक इंडिया में डोमेस्टिक, जैसे आपने कहा कि इवन इफ कांग्रेस इज इन पावर और सम अदर पार्टीज इन पावर, दे आर नॉट गोइंग टू change this direction of events. So why is the Indian public opinion and conscience not moved? That's I wish to understand that. Maybe part of it you mentioned earlier about Pakistan and its role, etc. But कुछ और भी वजह है क्या? कश्मीर बहुत ही कोई दूर जगह है, बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है, क्योंकि सिनेमा में भी कश्मीर का जिक्र होता है, बॉलीवुड में जो है वो हर वक्त होता है। तो ये ऐसी भी बात नहीं है कि पब्लिक नॉलेज में नहीं है ये बात। रजा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कहा था मैं इसको फिर से दोहराना चाहता हूं ताकि इट इज नॉट मिसअंडरस्टूड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल ओपिनियन जो कुछ हुआ है इसको करेक्ट करने के फेवर में नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आर्टिकल 370 is not going to be restored, but the suppression of democratic rights, the suppression of violation of human rights, and all the indignities that have been placed on the people of Kashmir, especially the women of Kashmir, which was so touchingly described by our sister here. Of course, the conscience of India must revolt against it and will revolt against it. All this has to be acted. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ये सब आर्टिकल 370 फिर से
बहाल होने से ये सब हो जाएगा, इस गलतफहमी में कोई न रहे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, एंड here again I think that a lot of people perhaps on this panel and even in Pakistan may not agree with this, but the issue of azadi, of independence for Kashmir as a sovereign, independent, free nation is not going to get realized. This is a reality that must be accepted by the people of Pakistan, that must be accepted by the people of Kashmir, and of course by Indians too. It can only lead to many more problems for India, for Kashmiris, and for Pakistan itself. It is not that the demand for separation is only limited geographically to Kashmir. All of you know it very well. And it is not in the interest of South Asia. It is not in the interest of Pakistan. It's not in the interest of India, and certainly not in the interest of Kashmir, that this whole attempt should be in the direction of, in the name of self-determination, trying to make Kashmir an independent nation. It is not going to happen. So therefore, let us look at what actually can happen and should happen, which will make life dignified for the people of Kashmir. And also, when I say people of Kashmir, not only for Muslims of Kashmir, but also for Hindus of Kashmir. And this requires India and Pakistan to sit together in an atmosphere of mutual trust, in an atmosphere of mutual accommodation, so that we find a solution that is acceptable to the people of Kashmir on both sides of LOC, and also to the people of Jammu and Kashmir, because in many ways this state called Jammu and Kashmir is an artificial state. Anyone who knows the history of Jammu and Kashmir, Jammu, Ladakh, Gilgit-Baltistan, all of that coming together in the days of imperialism, we know how it has happened. And there are people in Gilgit-Baltistan who are also aspiring for democratic rights. There are people in the other side of Kashmir who are also aspiring for democratic rights. So we have therefore to find a solution which gives a permanent state of relief, a lasting solution. And this, I believe, is only possible if India and Pakistan come together by undoing the negative effects of partition, and not by creating one more nation, which is not going to happen. Okay, Kulkarni ji, I'll go to Iftikhar Saab. Iftikhar Saab, you've heard this, I think I would actually frame the question the same one that I asked Naima, that, what in political terms, जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीर के जो वादी में रहते हैं और दूसरे इलाकों में रहते हैं, उनकी क्या व्यू है? क्योंकि देखिए, हम ये सुनते आए हैं कि अब मेजॉरिटी ओपिनियन जो था वो एक अलग जो है मुल्क चाहता है या आज़ादी चाहता है। आज़ादी का नारा तो अभी भी लग रहा है वहां पर, अगरचे कि वो दबाया हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं एज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कि ये अगला रास्ता क्या है? या माइक को अनम्यूट कर दीजिए अपना। जी। Let me first respond to Kulkarni साहब, then I will frame this question जो आपने कहा कि in a broader framework, हो सकता है शायद उससे हमें भी फायदा पहुंचे उससे। नंबर एक तो जो है टेररिज्म या मिलिटेंसी वगैरह जो है किसी वैक्यूम में नहीं पनपती है। टेररिज्म का मतलब ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस हैज फेल्ड, पॉलिटिक्स हैज फेल्ड। 1947 से लेकर 89 तक कश्मीर में कोई मिलिटेंसी नहीं थी। 1965 में even if Kashmiri didn't become part of the insurgency 1960-65 में. So why it's so in 89? Why didn't we think about it? ये सबसे पहले जब हम बातचीत का सिलसिला जब खत्म हो जाता तभी तो कोई गन उठाता है। So it was some, और दूसरा ये है कि this bilateral tracks between India and Pakistan have failed. Bilateral tracks between New Delhi and Srinagar have failed.
1950 Delhi Agreement, where is that? 1975 this Indira Abdullah Agreement, was it implemented fully? Never. This same is with the Shimla Agreement, same with Tashkent Agreement, same with Lihaza jo hai na, I think this on this to give some credit to Kulkarni Sahab when he was in the Prime Minister's office in January 6, 2004, the Vajpayee when he went to Islamabad, after that ये दोनों tracks थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो गए थे. There was some effort that these two tracks ये सिर्फ जो है nothing will happen only between the Islamabad and Delhi, nothing will happen only between the Delhi and Delhi and Srinagar, nothing would happen only between the Islamabad and Srinagar. So these, I think a triangle had started building up. So unfortunately, that didn't after that this it was continued somehow by the Manmohan Singh government also, but after that everybody knows why nothing came out of the process. Now about now जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले जो है ना, you just try to understand कश्मीरियों की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है. एग्जैक्ट फर्स्ट, कश्मीर प्रॉब्लम इज नॉट 1947 से स्टार्ट नहीं हुई है. कश्मीरियों की प्रॉब्लम ये है कि फॉर लास्ट 460 years, right from Mughals to Afghans to Sikhs to Dogras, they are being ruled by governors. They have never been, Kashmiris have never, after the Yusuf Shah Chak, the last emperor of Kashmir, was by deceit, जो है, and the Kashmir almost was the only one जिन्होंने तकरीबन जो है मुगल आर्मी को तकरीबन 7 साल तक पूंछ के रोक के रखा था. After the 7 years that it was this Raja Bhagwan Singh, he had an agreement almost, he negotiated it for 3 years with the king. After 3 years negotiations, and if you see that agreement almost which was not implemented, which was actually placed on the table, it is almost what Article 370 of the Indian Constitution was. I am telling it is 1586 की बात कर रहा हूँ मैं. So yes, after this he was taken to Lahore to sign that agreement with Akbar the king, and from there he was arrested and sent to exile in Bihar, and he died in Biswak in Bihar. उसकी कब्र वहीं पर है. From that onwards, Kashmir has been ruled by the governors from outsiders. Either they were the Mughal governors or they were this. So this is the only this now after 1947, after this, yes, Sheikh Abdullah went to democratic and secular India. So we had an impression that under the democratic and secular India, we will be, at least Kashmiri will now be ruled by himself. Kashmiri will be now ruled by himself. What happened? The first Constituent Assembly election, which happened, 75 members out of 75, all of them were nominated. Nobody was elected, to the extent that even RSS boycotted it in Jammu. This election, they called it a rigged election. For all this period, there is nobody actually whom Kashmiri could identify themselves, except the small period of Sheikh Abdullah. They have never identified with the ruler in Srinagar, Kashmiris. So this is the first thing this is the political, social, psychological, and economic disempowerment which is in the minds of the Kashmir. Number one. Number two, this Kashmir, it used to be a connecting link, at least between South Asia and Central Asia. Kashmir had a disempowerment complex, but at least it was all the connecting. This region was highly connected region. The Ladakh, which is right now so remote that even after this, when this it was made a separate union territory. None of the officers, this government मुलाजिम कोई जानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था वहां पर. इवन जो लद्दाख के जो लद्दाख कार्डर से आए थे, लद्दाख से आए थे, वो जाने के लिए वहां तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इतना रिमोट एरिया है. दिस एरिया बाय दिस 1920s, ये ग्रेट गेम का एक बहुत बड़ा पार्ट था. इट वाज हाईली कनेक्टेड रीजन. लद्दाख में जो है बाय अर्ली सेंचुरी, इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख, वहां तुर्किश लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज होती थी बिकॉज ऑफ ट्रेडर्स जो आते थे वहां पर. इसी तरह सेम वाज विद कश्मीर. अमृतसर से जो कारवान चलते थे श्रीनगर होते हुए, काशगर जब जाते थे वो श्रीनगर होते हुए जाते थे. श्रीनगर की जो मेजर पार्ट इकोनॉमी है, दैट इज दिस शॉल्स एंड द कारपेट, उनका जो रॉ मटेरियल है वो अभी कश्मीर में नहीं बनता है. वो रॉ मटेरियल भी अभी भी सेंट्रल एशिया से, तिब्बत से, हाई रीचेस ऑफ तिब्बत एंड हाई रीचेस इवन मंगोलिया से आता है. वो अभी भी इस वक्त भी मंगोलिया में वो गोट जो है उसको पालते भी हैं, उसका नाम ही कश्मीर गोट है.
उनको पता भी नहीं होगा ये कश्मीर गोट क्यों कहलाते हैं उसको, क्योंकि उसका वूल अल्टीमेटली तरीके से कश्मीर पहुंच जाता है जिसे पश्मीना बनता है। या शाह जो है वो भी तिब्बत के जो हायर रीचेस की जो वो डियर था वहां से वो लाया जाता था। So I am telling you that this region was highly connected region. So the first when this Kashmir ka jo Islam, jo Mir Sayyid Ali Hamadani, the person who brought Islam to Kashmir, the kind of veneration the South Asian Muslims have for Ajmer, the Kashmiri Muslims have the veneration for the Mir Sayyid Ali Hamadani. Uski jo grave jo hai, it lies in the Klu province of Tajikistan. So first जब ये Chinese cultural revolution, फिर Soviet Union, all these regions started getting cut off from Kashmir. Then came 1947 ने तो और भी ज्यादा कश्मीर को बिल्कुल ही बीच में एक लकीर खींच दी, और वो भी ऐसी लकीर खींच दी कि इट इज अ वेरी हाईली अनसाइंटिफिक लकीर है ये, और फिर उसके बाद कंपाउंडेड बाय द हैवी मिलिटराइजेशन, so it became a big jail at least kind of a thing. जो कनेक्टिविटी थी उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई इनकी. It has given a rise to a siege mentality, siege mentality. इस siege mentality ने वहाँ, it is a negative mentality, siege mentality, to be honest with that. ये एक जेल के अंदर जो एक प्रिजनर की मेंटेलिटी होती है, जेल का सुपरिटेंडेंट भी जो है प्रिजनर को खीर तो खिलाता है, खाना तो खिलाता है उसको, तो लेकिन उसकी रिलेशनशिप हमेशा से प्रिजनर और जेल एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी. ये जो है ये कभी एक डेमोक्रेटिक रूलर की और एक उसके सब्जेक्ट की रिलेशनशिप कभी नहीं रहेगी जब तक ये इश्यूज एड्रेस नहीं हो सकते हैं, जब तक सीज मेंटालिटी वहां खत्म नहीं हो जाती है, जब तक डिसएम्पावरमेंट कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं हो जाता. अब वो कैसे करेंगे, दैट इज द टू कंट्रीज हैव टू सिट डाउन एंड फाइंड दिस. क्या ये सोशल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट है कश्मीर की पिछले 400 सालों की, ये कैसे खत्म हो सकती है, ये जो सीज मेंटालिटी है, जो प्रिजन माइंडसेट है कश्मीरियों का, ये कैसे खत्म हो सकता है, कश्मीर को कैसे जो है अपने रूट्स के साथ दोबारा जोड़ा जा सकता है. ये तीन चीजें हैं कश्मीर इश्यूज ओवर. ठीक, बहुत इफ्तिखार, थैंक यू. बहुत ही आपने कॉम्प्रिहेंसिव हमारे व्यूअर्स को एक हिस्ट्री का जो है वो भी दे दिया है, लेसन भी दे दिया है. तो मैं अब हमारा टाइम असल में खत्म हो रहा है. मैं चाहूंगा कि मैं सबके पास जाकर एक मिनट जो है आप उसमें अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें. सोलंकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ. मजीद जो कुलकर्नी साहब ने भी कहा पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, जरा आप भी इसमें बताएं कि क्या होनी चाहिए और आगे इसको कैसे हम हैंडल करें. इतना पेचीदा हो गया मसला. देखिए जी, हम इस मसले पर बात क्यों कर रहे हैं. एक पाकिस्तानी के तौर पर, जो कश्मीरी भी नहीं है, मैं तो साउथ से आया हूँ, सिंध से, और हम लोग पाकिस्तान में शामिल हुए 47 में, बल्कि सिंध असेंबली ने सबसे पहले करारदाद मंजूर की कि हम पाकिस्तान बनाते हैं. तो हमारा तो ना इलाका तकसीम हुआ ना कुछ हुआ. ये जो 70-72 साल गुजरे हैं, कश्मीर का जो तनाज़ा है उस पर हम आज जो बात कर रहे हैं उसकी वजह क्या है. हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और भारत जो है वो दो एक मिलिटराइज्ड स्टेट्स बन गई हैं. पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बन गया है और इंडिया जो है वो एक इंतहाई पोलराइज्ड एक मुल्क बन गया है. आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था अपने दोस्त सिद्धार्थ का, तो उसने कहा कि आप मोदी को ट्रंप से और पुतिन से और इन लोगों से आप तशबीह ना दें, इनको तशबीह दें सलाबुद्दीन मिलोसेविच से, जिसने अपने मुल्क के साथ टुकड़े कर दिए. तो हम इसलिए इस मसले पर बात कर रहे हैं कि ये कोई 1.5 अरब लोगों का जो मुस्तकबिल है उसको खतरे में डाले हुए है. अब भारत के अंदर जो कश्मीरियों के जो मुश्किलात हैं और जो उन पर मजालिम ढाए गए हैं, वो हम इसलिए महसूस करते हैं कि एक तारीख का हिस्सा है, एक कॉलोनियल, एक लेफ्ट ओवर एक इशू है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ. लेकिन इसलिए भी हम उस पर बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान और भारत हम दोनों को मुतासर करता है, दोनों के अवाम को मुतासर करता है. अगर ये मामला पुरअमन तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा
तो हम दोनों मुल्कों की जो मुस्तकबिल है और फिर इस रीजन का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अब जहां तक शर्मिंदगी की बात है, तो हर रियासत को अपने मुल्क के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामालियां हैं उन पर शर्मिंदा होना चाहिए। भारत को शर्मिंदा होना चाहिए कि अगर कश्मीर के अंदर वहां लोग अपने आप को उनके इंसानी हुकूक पामाल होते हैं, तो बाकी जो भारत के जो लोग हैं उनको वो दुख, तकलीफ और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के किसी इलाके में इंसानी हुकूक की पामाली होती है, तो पाकिस्तान की रियासत को उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो एक मीडिया पर्सन के तौर पर हमारा जो काम है वो रियासत के स्पोक्समैन का नहीं है, बल्कि रियासत पर एक वॉच डॉग का है कि हमारी रियासत जो है अगर कोई गलत काम करती है तो उस पर तनकीद करें। ये हमारा काम है। हम रियासत के तर्जुमान नहीं हैं, लेकिन हम अवाम के हुकूक के तर्जुमान जरूर हैं। तो हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं आज यहाँ बैठ के कि हम कोई रास्ता सजेस्ट करें कि ये दोनों रियासतें जो हैं वो कोई अकल का रास्ता अख्तियार करें, इंसानी हुकूक को रिस्पेक्ट देने का रास्ता अख्तियार करें, ताकि ये जो आग और खून का जो दरिया बहे हैं 70-72 साल में वो खत्म हो। बहुत उम्दा, थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड। और मैं कुलकर्णी साहब आपसे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगा आज के हवाले से। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, कोई एनी स्पेसिफिक फॉर फ्यूचर जो आप कह रहे हैं कि ये बातचीत करने से मसला हल होगा, तो उस पर जरा और रोशनी डाल दें। देखिए जी, हमें जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ पास्ट की ओर देखेंगे तो बहुत सारे कंप्लेंट्स और काउंटर कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, काउंटर ग्रीवेंसेस हमें देखने को मिलेंगी और उसमें बहुत वजन भी होगा, लेजिटिमेसी भी होगी। लेकिन हमें फ्यूचर की ओर देखना है ताकि हम whatever problems we have inherited from the past, we can actually make them part of the past. और इसलिए कुछ ग्राउंड रियलिटीज को हमें समझना होगा। is the problem of Kashmir, can it be solved, as many people in India, especially political parties and especially the ruling party today, can it ever be solved by taking over the Kashmir on the Pakistani side? Or not just Kashmir, but the whole of Jammu and Kashmir, of which the Gilgit-Baltistan is a much larger part. हमारे लोग कहते तो हैं, लेकिन एक दिन पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होगा, क्या ये होने वाला है? ये कभी भी नहीं होने वाला है। Never will India be able to take the other side of Kashmir or Gilgit-Baltistan, and also never will India be able to take Aksai Chin, which is with China. So similarly, can Pakistan ever take Kashmir that is with India? It is not possible at all. Can Kashmir become an independent, separate nation, separate from India and Pakistan? It's not going to happen. And this is where I would like to respectfully submit to my very dear friend Iftikhar Saab that we should make a distinction between independence and self-governance. You know, all that he said about self-governance is absolutely right, absolutely legitimate. The people of Kashmir must have a feeling, and a very genuine feeling, that they are the masters of their own lives. So then what is the innovative way? I think many of the problems that India and Pakistan are facing are because we are still trapped in the Westphalian understanding of nation. The notion of nation, sovereign nation, that we have borrowed and are imitating from the West.
This is not the understanding of mulk or watan or rashtra that we have historically understood ourselves, meaning that we have to now move in the direction of a shared sovereignty, not exclusive sovereignty, but shared sovereignty. And here I would like to especially, what Iftikhar Saab said is absolutely right, that because of our hostility, a region that was so well connected with so many parts of the rest of the world, like Kashmir was, it has been trapped into isolation and confinement. It is a grave injustice that we have committed on the people of Kashmir and also on the people of other parts of Jammu and Kashmir. So, connectivity, we should open up the regions to all their neighbors. And which is why I have been, as an Indian, strongly advocating that India and Pakistan and China should come together in a grand connectivity project that not only contributes to development prosperity, but also brings people together. Why should there be this Berlin Wall between one side of Kashmir and the other side of Kashmir? So connectivity, whether we call it Belt and Road Initiative or whatever we call it, all three countries, India, Pakistan, China, can come together and give a completely different name for it, but we must get connected. The fact that India and Pakistan so close are yet so far because we are disconnected. आज आप वाघा border पे देखिए, it's a very sad scene. We have, for centuries we have been together. There was a road all the way from Peshawar to Chittagong in current day Bangladesh. और आज क्या हुआ है? Is this natural? Is this acceptable? तो ये जो दीवारें हैं इनको तोड़ना पड़ेगा. We should again reconnect the entire region. And in this reconnecting, most important is reconnecting the hearts and minds of the people. The diverse people of Kashmir and Jammu and Kashmir, the diverse people of India and Pakistan. Only when we put this problem of Jammu and Kashmir in the larger context of reconciliation between India and Pakistan can we find a proper solution. तो इसलिए मैं फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, let us move in a direction that demilitarizes Kashmir. Demilitarization is the source of so many injustices and brutalization. As an Indian, I feel ashamed what we are doing to the people of Kashmir. So we must demilitarize Kashmir. We must demilitarize relations between India and Pakistan and think anew, like brothers, like sisters, how as members of one united large family, we can live in separate houses, but we can still be together. This is the teaching of the great teachers of our civilization, whether they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist. They have all taught us to live together. So in the light of the shared civilization wisdom of India and Pakistan, of Islam, of Hinduism, that we can find a way of love, a way of brotherhood, a way of living together, a way of accepting and respecting the right of every community to live life of dignity and freedom. Thank you. थैंक यू कुलकर्णी जी. एंड द फाइनल वर्ड नईमा जी आपका है, क्योंकि बाकी सबकी बात हो गई है. आप प्लीज इसको कंक्लूड कर दीजिए मुख्तसरन, और फिर हम इसको अपनी ब्रॉडकास्ट को एंड करेंगे आज के लिए. जी मुख्तसरन इसलिए कि मुझे जाना है. मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट में मैं निकल जाऊंगी. एनीवे, विद रिस्पेक्ट टू कुलकर्णी जी, कि मुझे लग रहा है कि कुलकर्णी जी आज एक और मसला खड़ा किया हमारे लिए, कि आज ये इन्होंने एक और नरेटिव जो है वो लेके आए हैं कि हमें 370 आर्टिकल जो कुछ भी हुआ उसको भी भूल जाएं, जो 47 में हुआ उसको भी भूल जाएं, और इस वक्त तक जो कुछ हुआ है उसको हम सब बिल्कुल नेगेट करें, और नए सिरे से हम जो है रिलेशंस आपस में
बनाएं और आगे चलें. लेकिन इस सब में मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो वाघा से भी जाते हैं, राजस्थान की बॉर्डर से भी जाते हैं, सारी बॉर्डर्स उनकी खुली हुई है. ये सिर्फ कश्मीर का मसला है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला है जहां पे प्रॉब्लम है. और मुझे नहीं लगता है कि जब तक, अगर आप कश्मीर को इस तरह से कह रहे हैं कि आप फिर अगले 100 साल तक इसको मैनेज करने की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कुलकर्णी जी, आपसे मुझे तो वैसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का सलूशन देंगे. हाँ, हमें जरूर पुरअमन तरीके पे कश्मीर मसले का हल तलाश करना होगा और उसमें कश्मीरियों की मर्जी शामिल होनी चाहिए. लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम 370 को भूल जाएं, अपनी शिनाख्त को भूल जाएं, आईन, परचम, सब कुछ, और बाहर से आके लोगों को बसाया जाए, डेमोग्राफिक चेंज उसको हम एक्सेप्ट करें आंख बंद करके, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादती होगी. इसको दोबारा आपको देखना होगा, रिविजिट करना होगा, और कश्मीरियों से क्या क्या स्नैच किया गया है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है और उस पर गौर करने की जरूरत है. बहुत शुक्रिया. आपने कुछ सवालात छोड़ दिए हैं कुलकर्णी जी के लिए भी, और मेरे ख्याल से बाकी जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे. मेरे ख्याल से हमें आज की ब्रॉडकास्ट को अब कंक्लूड करना है. आप सबकी इजाजत से मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूंगा कि कुलकर्णी जी ने जो नक्शा खींचा है वो बिल्कुल एक लिहाज से सही है कि जब तक हम इसको रीजनल लेवल के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के आगे की तरफ देखने को इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम पास्ट में ही वो रहेंगे. 47 की जब भी बात होती है तो कोई कश्मीर का इशू होता है, इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो वही बिटर हिस्ट्री जो है वो आ जाती है. हम आगे का नहीं सोचते. तो इस वक्त हमें आगे का सोचना है, लेकिन आगे का हमने नहीं सोचना. ये कश्मीरी अवाम, कश्मीर के लोग, कश्मीर के मर्द, औरतें, बच्चे, नौजवान जो इस इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, और ये उनका अव्वलीन हक है और इस्तेहकाक है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फैसला करें, और ऐसा फैसला करें कि जिससे उनके यहाँ भी अमन आए, खित्ते में भी अमन आए, और ये कि जो इस वक्त ब्रूटल एक राज है वो एंड हो. 1 साल ये पूरा हो गया. हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए, प्रेशर डाला जाए. इंडिया के अंदर सबसे अहम जरूरत है इस वक्त इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, इंडियन मीडिया, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया की सिविल सोसाइटी, कि वो ये जो क्लैंप डाउन है, ये जो लॉकडाउन है, ये जो बर्बरियत है, इसको एंड करें. और फिर बाकी सारी बातों पे बिल्कुल बात हो सकेगी, क्योंकि वो होनी भी चाहिए और उसकी जरूरत भी है. इफ्तिखार गिलानी साहब शुक्रिया, कुलकर्णी साहब शुक्रिया, नईमा आपका शुक्रिया, और सोलंकी साहब थैंक यू फॉर पुटिंग दिस टुगेदर. नाजरीन, खुदा हाफिज.